अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं इधर बाहर बच्चों को लेके एयर शो देखने। तो यहाँ छोटे छोटे हेलीकॉप्टर, छोटे छोटे जहाज़ जो हवा में उड़ रहे हैं और कुछ अपना मुजाहरा भी कर रहे हैं। और ये देखें, किस्म के जहाज़ों में कुछ हेलीकॉप्टर हैं, कुछ जहाज़ हैं और कुछ इधर जो है ना, इन्होंने जैसे वो मेला लगा होता है ना, स्टॉल से लगाए हुए हैं जगह जगह खाने पीने की चीज़ें, आइसक्रीम, उसके अलावा पॉपकॉर्न, उसके अलावा जो इनकी खाने से, हमारे तो पाकिस्तान में समोसे, पकौड़े, चाट, इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं खाने पीने की भी, चटपटे, बारबेक्यू। तो यहाँ पे भी यही कुछ इसी तरह मुझे लग रहा है जो उनके टेस्ट के मुताबिक है। और ये अंदर चलते हैं, देखते हैं इधर क्या हो रहा है। ये इधर मॉडल रखे हुए हैं इन्होंने, चले आपको ये दिखाते हैं। ये देखें जी, इलिनॉइस इनकी स्टेट है, इसका बड़ा शहर शिकागो है, उसका ये इन्होंने मॉडल यहाँ पे ना ये वाले The trick is you need to make sure it's the important name. All the models for the names all have something like LT40. शीशे पीछे, तो मैं सोच रही थी कि पीछे और लोग हैं दूसरी जगह। LT40 CS, which means color scheme. I got told by that. टीवी पे भी जो दिखा रहे हैं, उनको जो शो कर रहे हैं, वो चला रहा है बंदा, उतार रहा है, चढ़ा रहा है। ये भी है, एक मॉडल रखा हुआ है इन्होंने। पीछे पीछे और यहाँ पे मेरे ख्याल है इनका ये बन रहा है, एक बन खड़ा है, ये बंदा भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। On most airplanes, the fuel is kept in the wing. Why? Because you have space, right? बनाने इसने खुद बनाया एयरप्लेन, तो ये दिखा रहा है ये इसने घर में कैसे बनाया है। अच्छा, ये देखो Okay, तकनीक है इन लोगों के पास। So the leading edge of the wing is the fuel tank. So what I have here is if we were to build a fuel tank like this. So what you do when you build an airplane, you start off, the parts may simply be a piece of sheet metal, and then you have to measure, cut. You have to, measure. You have drawing that show you what the parts need to look like, or maybe the manufacturer has cut it into pieces. Okay. You may have to use special tools like this so you can kind of make folds in the metal, nice smooth folds. स्पेशल मेटल काटने वाला ना बता रहे हैं। And then so then you can see that I have this one part that would be called a rib. Yeah. A rib. Because they're like ribs इस in a बंदे ने ना skeleton. खुद जहाज बनाया, वो तरीका बता रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया और इस तरह बनाया मैंने ना। And this is the way, this is what it looks like inside most of these airplanes, that you have these structural elements like this. इसी तरह से इनको गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है, फिर इनको हायर कर लेती है, ये तो बना के देते हैं। So the way you assemble it is ये ना एयर शो हो the रहा है। pieces together. ये भी एक है इधर, ये बनाए हुए हैं दो बंदे की बैठने की जगह। और उसकी छतरी बनाई है, उसके नीचे कुर्सियाँ लगा के बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा शायद शेड है किसी चीज़ का, तो इसके नीचे कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये देखें, दो बंदों की जगह। ये एक यहाँ बैठा हुआ है, दो बैठते हैं, दो बंदों की जगह। What you have are a bunch of holes that actually have very rough edges, and the edges of the metal are also very rough. And you want to जल्दी से बता रहे कैसे हम लोगों ने बनाना है। two reasons. One is you don't want to cut yourself. So as you work on the airplane, you're going to cut yourself. The other, probably more important reason is
any sharp बच्चे edge, देखें कि सब like you'd see on a दिलचस्पी ले रहे हैं bowl or on the edge of a piece of metal, any sharp edge is where a crack is formed. That's where a crack would form. And you know, airplanes are very vibration